श्री हनुमते नमः। श्री हनुमत स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम ध्यान। वंदे विद्युज्ज्वलं विलसद्ब्रह्मसूत्रे कनिष्ठम् कर्णद्वन्द्वे कनकर्चिते कुण्डले धारयन्तम् सत्कौपीनं कपिचरभृतं कामरूपं कपीन्द्रम् पुत्रं वायोरिनसुतसुखदं वज्रदेहं वरेण्यम्। स्तोत्र आञ्जनेयो महावीरः हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदायकः सीतामुद्राप्रदायकः अशोकवनिकेच्छेता सर्वमायाभिभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षोबिन्दस्तारकः सर्वविद्या परिहारः परशौर्यविनाशनः परमंत्र निराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहर सर्वलोकचारी मनोजवः परिजातृमूलस्थ सर्वमंत्र स्वरूपवान् सर्वतंत्र स्वरूपी च सर्वयंत्रात्मकश्च मे कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्प्रदप्रदायकः कपिसेना नायकस्य भविष्य चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डल दीप्तमान् संचल्द बाल सन्नध लम्ब मानसिकोज्ज्वलः गन्धर्व विद्या तत्त्वज्ञो महाबल पराक्रमः कारागृह विमुक्ता च सिंहला बन्धुमोचकः सागरोतारकः प्रागः रामदूत प्रतापवान् वानरः केसरी सुतः सीता शोक निवारणः अंजना गर्भ संभूतो बालार्क सदृशाननः विभीषण प्रिय करो दशग्रीव कुलांतकः लक्ष्मण प्राणदाता च व्रजकायो महाधुतिः चिरजीवी राम भक्तो दैत्यकार विघातकः अक्षहन्ता कंचनाभ पंचवक्त्रो महातपः लंकिनी भंजनः श्रीमान् हिंहिका प्राणभंजनः गन्धमादन शैलस्थलङ्कापुरविदारकः सुग्रीव सचिवो धीर सूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्जितो महातेजा रामचूडामणि प्रदः कामरूपी पिंगलाक्षो वर्धिमेनाथ पूजितः कवलीकृत मार्तण्ड मंडलो विजितेन्द्रियः राम सुग्रीव संधाता महारावण मर्दन स्फुटता भूभागधीशो नव्याकृति पंडितः चतुर्बाहुर दीन बंधुर महात्मा भक्त वत्सलः संजीवन गाहर्ता सुचिरवाग्मी दृढ़व्रतः
कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्त प्रसन्नात्मा सतकण्ठ महादपहरत योगी राम कथालोलः सेतान्वेषण पंडितः वज्रदष्टो वज्रनखो रुद्रवीर समोद्भवः इंद्रजी प्रहिता मोघ ब्रह्मास्त्र विनारकः पार्थध्वज जाग्र संवासी सरपंजर वेदकः 10 बाहुलोक पूज्यो जामत प्रीति वर्धनः 10 बाहुलोक पूजो जामवत प्रीति वर्धनः सीता समेत श्री राम पाद सेवा धुरंधरः श्री हनुमदष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्णम् हनुमान अंजनी सुनुवार पुत्रो महाबलः रामेष्ट फाल्गुन सख पिंगाक्षो मित विक्रम उदते क्रमश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः सापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नाशरणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गहरे च भयं नास्ति कदाचन करचरण कृतं वाक्याजं कर्म जम वा शरणनयन जम वा मानसं वा अपराधम् विहितम अभिहितम वा सर्वमेतत्समक्ष जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो।